tell me that you all have understood the menstrual cycle or not. Menstrual cycle, the figure which is given in the textbook, that you have to follow. Okay, in the book they have given very nicely the in the diagram that what changes take place in the ovary, what changes take place in the uterus, and what is the role of the different hormones. So you have to remember the four hormones. The two hormones which are secreted by the pituitary, they are the FSH and LH. They control the ovaries, and the ovaries secrete the other two hormones, that is estrogen and progesterone. Am I audible to everyone? Yes or Yes, ma'am. no? Yes, ma'am. Okay. हाँ, सो नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि ओवरीज में ग्राफियन फॉलिकल का बनना स्टार्ट होता है। तो फ्रॉम स्मॉल टू बिग 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 यू मस्ट बी सीइंग इन द फिगर दैट 14th डे ना ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, एंड देन देयर इज अ सडन डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ द एफएसएच और साथ में ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, and there will be the rupturing of the Graafian follicle, which will result in the ovulation process. आलिमा, ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. आलिमा, did you read it further? I read the book. हाँ, you read it everything? तो समझ में आ गया कि how the process is going on? Yes, ma'am. Okay. Then same with Shifa, did you understand? Yes, ma'am. ठीक है, प्रांजल? Yes, ma'am. हाँ, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 3 marks and sometimes 5 marks, that what is the role of hormones in the menstrual cycle. So you have to remember that four hormones play very important role in maintaining this menstrual cycle of 28 days. ओके, तो 14th डे पर वो लेवल कम हो जाता है और रप्चरिंग हो जाएगी, एंड द कॉर्पस ल्यूटियम विल बी फॉर्म्ड। कॉर्पस ल्यूटियम विल स्टार्ट सिक्रीटिंग द प्रोजेस्टेरोन। तो आप आगे के फिगर में देखोगे 14th डे के बाद वाला, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ दिखाते हैं। ओके, वो इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, और फिर देयर विल 28th डे पे जाके देखिए एकदम से वो डिक्लाइन हो रहा है। वो डिक्लाइन जैसे ही ये बढ़ रहा है प्रोजेस्टेरोन, तो यू विल सी कि यूट्रस की भी थिकनिंग बढ़ गई है। ओके, वो थिकनिंग बढ़ती जाती है, और फिर जैसे ही 28 डे में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, सडन डिक्लाइन इज देयर, तो देन रप्चरिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम विल टेक प्लेस। Endometrium will disintegrate and will be shed off, and that will lead to the menstruation. इज इट क्लियर? तो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ वी हैव डन दैट हाउ द sperm will be formed, how the ovum will be formed. In the ovary, the ovum is formed. In the testes, the sperms are formed. The sperms will be coming into the urethra. It will be present in the seminal fluid, which is the secretion of the seminal vesicle and the, can anyone tell, seminal vesicle and Prostate gland. prostate gland, दोनों का secretion में, then it will have the seminal fluid in which the sperms will be present. So now sperms are also ready, ovum is also ready. Now what will मैम happen? Yes, yes, Manjul. हाँ, मैम हाँ, say. हाँ मैम, why all the events of menstrual cycle stop during pregnancy? Okay. All the events stop because during the pregnancy, the embryo development will start, and the zygote which is there in the blastocyst age, वो आके endometrium मतलब यूट्रस के inner lining पर implant हो जाता है।
Yes, ma'am. इम्प्लांट होने के बाद में अब आपको समझना है कि मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों स्टॉप होती है। मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली या मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विच ओवरीज में ओवम बनना है और यहाँ यूट्रस को थिक होना है। मंजुल, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, इतनी बात तो पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय क्या हो रहा है। दो चीजें हो रही है। क्या क्या हो रहा है? व्हाट टू इवेंट्स आर गोइंग ऑन? मैम इंडोमेट्रियम वॉल थिक हो रही है और बॉम्ब बन रही, बॉम्ब फॉर्मेशन। Ovum is formed. Okay, now when the pregnancy will take place या pregnancy start हो गई है तो उस समय ना तो ओवम की जरूरत है फर्दर। Is it clear? Ovum is a gamete which is helping in the reproduction process. अब रिप्रोडक्शन तो हो चुका है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है तो दूसरे ओवम की जरूरत नहीं है। तो Yes, ma'am. ओवरी में ओवम फॉर्मेशन रुक जाएगा। अब यूट्रस की एंडोमेट्रियम तो ऑलरेडी थिक है, ठीक है, उसमें Hmm. इम्प्लांटेशन हो चुका है। द एम्ब्रियो Hmm. डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड। तो व्हाई देयर विल बी disintegration of the endometrium. Okay, Yes, so that's why ma'am. there will be no menstruation. There will be No menstruation during pregnancy. menstruation is caused because of the disintegration of the endometrium of the uterus. Got it? Yes, ma'am. हाँ, तो अब अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो एंडोमेट्रियम को तो पूरे 9 मंथ तक तो मेंटेन रहना होगा, तब तो जाके उधर पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ओके, सो दैट इज व्हाई द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Got it. बट एक बात याद रखना है that the corpus luteum which was formed after ovulation, that is after rupturing of the Graafian follicle, that will continue to secrete the hormone progesterone. That will, Ma'am, progesterone helping the pregnancy it will help in pregnancy. It will help in maintaining the endometrium. thickness. ओके, एंडोमेट्रियम अगर डिसइंटीग्रेट हो गया तो समझ जाओ कि प्लासेंटा और वो अम्बिलिकल कॉर्ड सब टूट गया। समझ गए? उसी वॉल से तो वो जुड़ा था। Yes, ma'am. ओके, सो नाउ व्हेन वी विल डू दिस फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन तो आपको अभी बात समझ में आ जाएगी पूरी। ठीक है, तो शैल वी मूव अहेड नाउ चिल्ड्रन? Yes, ma'am. ठीक है, आदित्य। यस मैम। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप लोग ने जो पिछला अपन खत्म कर चुके वो सारे डायग्राम्स बनाए कि नहीं बनाए? हाँ, मैम आपने बोला था आप डायग्राम सेंड करेंगे जो हमको बनाना है। हाँ, एक स्पर्मियोजेनेसिस बस सेंड करूंगी मैं। मंजुल ने स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छा भेजा है, वो आप बना लो। यस मैम ठीक वो है, तो बना लिया। यस हाँ बना लिया, ठीक है। तो एक यस स्पर्मेटोजेनेसिस चाहिए, एक oogenesis डायग्राम चाहिए, एक ग्राफियन फॉलिकल चाहिए। ओके, फिर हम तो स्पर्मियोजेनेसिस का एक डायग्राम बस भेजेंगे, बाकी सारे आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम है। ओके, तो वो सब बन गए कि नहीं बने? आदित्य? वह अभी नहीं बना। अभी नहीं बने तो बना लो जल्दी से। आज वेडनेसडे है, बाय सैटरडे हमको प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ रहे हैं इन दोनों चैप्टर के डायग्राम्स चाहिए। इज इट क्लियर? तो कंप्लीटेड, या तो ऐसा करो कि अगले वेडनेसडे को आप अपनी नोटबुक लेके आइए तो स्कूल में ही चेक करा लो। ठीक है, दोज हु ब्रॉट टुडे तो आज हमने उनका चेक कर लिया, तो आप लोग वो कंप्लीट कर लो। और एक चीज और हम लोग डिसाइड कर रहे थे आज ही, दैट all of you all decide to come to the school and you write a test. ओके, 30 मिनट्स का टेस्ट कर लो एक एक चैप्टर में, और फिर बाकी के टाइम में अपन डाउट क्लियर कर लेंगे। और अगर सारे ही बच्चे आ जाते हैं या 70% भी आ जाते हैं तो हम लोग आगे का टॉपिक भी कर लेंगे। व्हाट यू से चिल्ड्रन? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, आप लोग को बताना है।
बिकॉज इफ यूल विल कम तभी ऐसा अपन कर पाएंगे। तो ये बताइए कि आप लोग ऐसा करना है, यू वांट टू डू दैट? यस और नो? आप मैसेज व्हाट्सएप पे कर देना अपने बायोलॉजी ग्रुप में, ठीक है, कि कितने लोग आने को तैयार हैं। तो जो भी आएंगे तो उन लोग एक एक चैप्टर पे टेस्ट तो देंगे, ठीक है। हाफ एन आवर का हम टेस्ट लेंगे और फिर आगे डाउट क्लियर करेंगे। Okay, so now let us not waste the time now. I am starting with the next process. So what you do, write it in the notebook, everyone, today's date, and write down fertilization. So the next step in the process of reproduction is the fertilization. Gametes are ready, they have matured, and the ovum has reached the fallopian tube to the ampullary isthmus junction. Now what will happen? So try to understand that. So fertilization, write down, it is the fusion of male and female gamete. Write it quickly, fertilization. अब पूरे नोट्स अच्छे से नोटबुक में लिखा करिए। ओके, डोंट मिस द थिंग्स चिल्ड्रन। ओके, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes to form a zygote. You try to mention haploid, male and female gametes, to form the diploid zygote is known as fertilization. Is known as fertilization. Done? Then write down, it occurs in the fallopian tube. It occurs in the fallopian tube in the ampullary isthmus junction. In the ampullary isthmus junction. Now Pranjal will read what she has written. Pranjal, Yes, ma'am. हाँ, हाँ, Fertilization. read what you have written just now. Yes, ma'am. It is a fusion of male and female gametes to form a zygote. It's called a fertilizations, and it occurs in a Okay, fallopian tube. हाँ, कहाँ फेलोपियन ट्यूब में? Where is the fallopian tube, children? अरे क्या लिखा? Shifa, can you tell me where in the fallopian tube? Yes, ma'am. Ma'am, the ampullary isthmus हाँ, junction. where? Ma'am, the ampullary हाँ, isthmus junction. प्रांजल, हाँ, प्रांजल will repeat. जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, ये सब अपन पढ़ Ma'am, चुके। ampullary. अभी भी नहीं पूरा बोल रहे हो। Ampullary tube. Where? Ampullary. Ampullary tube नहीं, ampullary isthmus junction. What is it? Ampullary isthmus junction. Isthmus junction. Isthmus junction. Okay. हाँ, ठीक है, तीन पार्ट है फेलोपियन ट्यूब के, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। तो एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में, ओके, जहाँ वो दोनों मिलते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर इन द फिगर, इट इज शोइंग दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ampullary isthmus junction. Okay, so now you can write down, the process is divided into the 4 stages. Quickly note now. Number 1, movement of spermatozoon towards an ovum. All are noting the things or not? Alima, are you noting? Yes, ma'am.
Nandini. Yes, ma'am. Okay. Shifa. Yes, ma'am. Okay. Now read the second point, Shifa. First stage is what? Movement of spermatozoa towards an ovum. Okay. Second one. Uh, Penetration of the spermatozoa. Okay. Spermatozoon. Now, spermatozoan. Okay. And then And the next one, Yuvesh will read. What is the third stage? Ma'am, cortical reaction. Okay. Then next stage, Yuvesh. Fusion of male and female nuclei. न्यूक्लियाई ठीक है तो फोर स्टेप्स हैं नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दीज फोर स्टेप्स आर कैरिड आउट okay so now try to take up the first one that is movement of the spermatozoan towards an ovum so now write down all these steps children very nicely in short the points are given you will write it number one the first step will be the coitus during the coitus the millions of sperms they are deposited in the vagina during this process, physiological maturation of sperms will take place. Means they will become more active and their speed will increase to move in the female reproductive tract. And this phenomenon is known as capacitation. So note down children this thing, capacitation. And this capacitation is very important children. If it will not be gained, so then the sperm will not reach till the ovum, that is the site ampullary isthmus junction. Then the ovum which is released during ovulation will travel through the fallopian tube towards the uterus. Towards the uterus. तो हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी क्या होना है सिर्फ वो इन्फांडिब्यूलम से एम्पुला की तरफ पहुंचेगा ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन penetration of the spermatozoon okay so the acrosome of the sperm will release the sperm lysine enzyme which dissolves the egg envelope and helps in the penetration of the sperm and this penetration only और acrosome का membrane covering को ovum के covering को ovum के envelope को dissolve करना that is fully termed as acrosomal reaction. Aditya will read. Ma'am, penetration of xenopellucida. हाँ all that so we'll do it अब इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे आगे. Did you get it this much? Noted or not? Yes, ma'am. All should Yes, note ma'am. down. Okay, so that is acrosomal reaction. Now see the next, the cortical reaction. So after the entry of the sperm, the perivitelline space is produced within the vitelline membrane. So in your book, one diagram is given, children, showing the sperms fusing with the ovum. उधर पर आपको कवरिंग में दिखेगी वाइटलिन मेम्ब्रेन. Okay, and I'll show you further the figures so you will get all these terms. The space is produced within the vitelline membrane. Now, what will happen now? This vitelline membrane will thicken further to form the fertilization membrane. To form the fertilization membrane. And this membrane will not allow other sperms to fuse with it, enter into it. So write the sentence मैम and the yes, yes, मैम ये वाइटलिन मेम्ब्रेन कहाँ पे है? ओवम के ऊपर, ओवम के कवरिंग है ये भी. And what Okay. does it mean that it doesn't allow other sperms to हाँ. entry? Now try, you know that
In one ejaculation, millions are produced. All Yes, ma'am. millions are reaching into the female tract. Okay, Yes. they all will run till the ovum. सारे पहुंच रहे हैं एम्पिलरी जंक्शन तक. Yes. ओके, मिलियंस में से नहीं तो हंड्रेड्स तो पहुंच ही गए. अब हंड्रेड Yes. चारों तरफ ओवम के दे आर moving around, and all the sperms are trying to penetrate. But once the one sperm fuses and enters, so then other sperm's entry will be restricted. Understood? Ma'am, after one Huh. uh, get fused Sperm. and other are not, or other are restricted. हाँ, others will Only one what? will. हाँ, अदरवाइज तो व्हाट विल हैपन, जितने आ रहे हैं वो सभी उसके अंदर पेनिट्रेट होते जाएंगे, सारे न्यूक्लियस अंदर पहुंच जाएंगे. Yes, ma'am. तो देयर इज अ मैकेनिज्म. ओके, Ma'am, दैट and इज अ what नेचुरल. happened in the case of twins then? हाँ, ट्विल्स केस में फिर ऐसा हो रहा है कि ये फेल हो रहा है. ओके, तो दो स्पर्म चले गए. So then that is an exception. Otherwise, physiologically, remember it is prevented. Okay, the entry of many sperms into the ovum is prevented by the formation of this fertilization membrane. Then all of it. इसलिए तो very few people have the twins. Yes, ma'am. Understood? हाँ, noted everyone. Yes. Okay, now the next one, the fusion of male and female nuclei. So now write it: when the sperm enters the ovum, the secondary oocyte undergoes meiosis too. I hope you are remembering. Everyone remembering that the Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. meiosis. हाँ, meiosis टू कब होगा? जब sperm उससे At the time of fusion. फ्यूज हो जाए. हाँ, during fusion. So the secondary oocyte undergoes meiosis II to form a second polar body and the haploid ovum. Haploid ovum. Note down very nicely all. फिर बाद में यहाँ वहाँ सर्च करने की जरूरत नहीं है, फिर सब रीडिंग करते जाना और बस अपने ओन वर्ड्स में यू हैव टू राइट डाउन. So fertilization occurs when the haploid nucleus of the sperm fuses with the haploid nucleus of the ovum to form a diploid zygote. To form a diploid zygote. Notice, shall I change now? Now, those children who are doing with the mobile and you do keep doing that, taking the screenshot and all, वो काम मत करो. ठीक है, क्लास में इतना टाइम दे रहे हैं तो ट्राई टू टेक इट इन दिस 40 minutes ओनली इन द नोटबुक. इज इट क्लियर? बाद के लिए काम मत छोड़ा करिए आप लोग, बिकॉज आई एम गिविंग यू द टाइम दैट यू नोट इट. ओके, तो आलस की वजह से ये मत करना कि स्क्रीनशॉट के लेके रख लिया बाद में लिखेंगे. ओके, डोंट डू दैट. ट्राई टू नोट इट इन द नोटबुक विद स्पीड. जैसे क्लास में लेक्चर्स नोट करते हैं ऐसे यहाँ पर भी करना है. Shall I change, children? Yes, ma'am. Okay. Shifa done? Shifa noted. Pranjal noted. Yes, ma'am. ठीक है, बदल देना. Okay. Now we'll try to see the significance. What is the significance of the fertilization? So it will stimulate the secondary oocyte to undergo meiosis II to form a haploid ovum. Then it will restore the diploid condition in the zygote. Then fertilization membrane will prevent polyspermy. It increases the metabolic activities. It induces variations. Ma'am, what this third point mean? Third one,
Yes, ma'am. Third one prevents polyspermy. Polyspermy meaning that many sperms fusing with the ovum. Poly Okay. means many. By the Understood? thickening of the vitelline membrane. हाँ हाँ. ओके, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाने के कारण ना पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाती है, क्योंकि अदर स्पर्म्स विल नॉट बी एंटरिंग, देयर एंट्री विल बी रिस्ट्रिक्टेड. Okay. डन ना? Yes. ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस लीडिंग टू एवोल्यूशन. तो आपको पता है कि अपने दो डिफरेंट डिफरेंट मेल गैमीट फीमेल गैमीट दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स से आ गए, एक मेल से एक फीमेल से. तो बोथ विल हैव द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट, मीन्स जेनेटिक वेरिएशंस will be there. Then fertilization will lead to the genetic variations, इसलिए वो हेल्प करता है एवोल्यूशन में भी. Then centrioles of the sperm initiate cleavage of the zygote. Children, remember, cleavage is a type of mitotic division which will be seen after the zygote formation. Okay? After once the zygote is formed, तुरंत याद रखो वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस पे डिवाइड होने लगता है माइटोटिकली. ओके, और वो जो माइटोटिक डिविजन्स होते हैं embryo development के समय, you call it as cleavage divisions. What you call it? Cleavage division. हाँ. ठीक है, तो इस वो that cleavage division will be induced by, it will be initiated by, Centrioles of the sperm. centrioles of the sperm. Okay, during spindle fiber formation. And then sex chromosome sperm helps in sex determination of the zygote. So these are all the significance of the fertilization. Done, everyone? Done or not? Done. Okay. Now try to see अब zygote बनने के बाद क्या होना है. So this also you note down, that embryo development. So after fertilization, the zygote divides to form morula. Okay. Now morula क्या है? That is, can you see this is diagram? So 18 to 32 cells बने, एक से दो बने zygote, तो एक न्यूक्लियस था डिप्लॉयड. नाउ इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग माइटोटिकली. तो दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से 32. So that way the process of the cleavage divisions will continue. Now when the zygote will reach the 16 cell stage, okay, and those cells, remember children, जो दो बने, दो से चार बने, you call it as blastomeres. Those cells are called blastomeres. Okay, and then 16 cells are formed inside that zygote which was there. So you will call it as morula. Then morula will further, you find the development will take place, it will further develop. अब डेवलप क्या होगा कि जो 32 सेल स्टेज बन जाएंगे, उस स्टेज में पहुंचेगा. एंड नाउ दो सेल्स विल गेट ऑर्गेनाइज्ड. कैसे ऑर्गेनाइज होंगे? तो यू विल फाइंड बाहर एक लेयर बन जाती है. कैन यू सी द स्क्रीन नाइसली ऑन माय कर्सर, चिल्ड्रन? यस और नो? माय Yes, कर्सर. ma'am. Yes, हाँ, ma'am. this Yes, ma'am. covering, this covering is there, this outer cell layer which we call it as a trophoblast. तो जो 32 cells थे वो ऑर्गेनाइज हो गए. कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? बाहर एक लेयर बन जा रही है और अंदर एक मास ऑफ सेल्स बन जा रहा है. तो दिस इनर मास ऑफ सेल्स, दैट इज द इनर सेल मास, is known as the embryoblast, and this outer cell layer is known as the trophoblast. What is it known as? Trophoblast. Trophoblast. ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, तो मैम अब जब ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट बन गया, यू विल कॉल इट ब्लास्टोसिस्ट. व्हाट यू विल कॉल इट? Blastocyst. हाँ,
Ma'am, Now you see the next. Yes, say. ma'am, blastomere will form morula, and morula will convert into blastocyst. Correct. Understood now? Yes, ma'am. Okay. Now see what will happen. अब blastocyst बनते बनते वो कहाँ पहुँच जाएगा? It will reach the uterus. Now it will get implanted in this endometrium. Okay, so you write it quickly. The trophoblast gets attached to the endometrium. Did you note down the previous one? Or I should show it again? All are noting with the speed or not? Okay, Yes, don't ma'am. believe the Yes. thing. हाँ, नोट नोट करते जाओ। क्लास में बैठे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना, सुन के बस नहीं छोड़ना। लिखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है, लर्न भी करना है। Okay, all the things should go on simultaneously. Trophoblast gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as an embryo. ठीक है, तो इसी का एम्ब्रियो बनने वाला है आगे, ये याद रखो। जो इनर सेल मास है इसी का पूरा एम्ब्रियो बनेगा। ये तो उसकी कवरिंग हो गई। फॉलोड? And with this covering only, it will be attached to the endometrium. मैम ये हेडिंग क्या चल रही है? मैम ये इसके ऊपर हम दिख नहीं रहा। ओके, सी आपने जो फर्टिलाइजेशन लिखा ना उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओके। दैट इज द एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ओके। ओके, हाँ। अब जैसे ही ये एंडोमेट्रियम से अटैच हो गया तो यू विल कॉल इट एज इम्प्लांटेशन। So that process is only known as implantation. You can write down after the attachment of the blastocyst, the uterine cells divide rapidly to form a covering around the blastocyst and thereby embedding it in the endometrium of the uterus. मैम जो ट्रोपोब्लास्ट के अंदर है वो ब्लास्टोसिस्ट है। हाँ बिल्कुल, ट्रोफोब्लास्ट सिर्फ कवरिंग है। ओके, अच्छा। ये जो कवरिंग दिख रही है वो ट्रोफोब्लास्ट है और मम्मी ये जो इनर सेल। अंदर ये dark, हाँ जिसको इनर सेल मास बोल रहे हैं वही एम्ब्रियोब्लास्ट भी है। यस मैम। क्लियर ना? यस मैम। हाँ, टर्म्स क्लियर हो गए ना? हाँ। और एम्ब्रियोब्लास्ट से ही फिर बनने वाला है पूरा एम्ब्रियो। पूरा बेबी डेवलप होगा इसी इनर सेल मास से। ओके, शैल आई चेंज नाउ? Yes, ma'am. ओके, so now I'll show you now the video, children. Just a minute, huh? So by the time it is starting, I want Aditya to read what you have written Okay, ma'am. Ma'am, from where? from the starting. Okay, ma'am. Fertilization पूरा start. हाँ, It is the fusion of male or female gametes to form a zygote. That is, हाँ, uh, zygote 2n is known as fertilization. correct. It occurs in the fallopian tube Then
in the ampullary isthmus junction. Correct. There are four stages. The first one is movement of Huh? spermatozoon towards an ovum. Second is Huh? penetration of the spermatozoon. Okay. Third is cortical reaction. Huh? And fourth is fusion of male and female nuclei. Huh? Okay. Then what will happen? Ma'am, the movement of Now one by one. yes, ma'am. Huh? Shall I continue? First one just say what will The first one is movement हाँ of a sperm first point पर click कर दो then actually movement of a हाँ spermatozoon towards an ovum. During coitus, millions हाँ of sperms are deposited in the vagina. During this process, uh, हाँ physio- physiologically maturation of sperms takes place. This phenomenon is called हाँ हाँ capacitation. Then हाँ further, the ovum, which okay is released during the example ovulation, travels through the हाँ fallopian tube towards the okay uterus. हाँ okay so I hope that much is clear basic पूरा समझ में आ गया अब इस वीडियो को देखो you will find it now better understanding will be there now. Fertilization to implant. For us humans, life begins when a mature ovum and a sperm fuse. This is called fertilization. As a result of fertilization, a diploid zygote is formed. The zygote then Audible children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay see this ball of cells enters the uterus and gets attached to its wall. This leads to pregnancy. Let's see the events from fertilization in detail. Click a button to learn more. now see nicely what is fertilization how it is going on. For us humans, Sorry. life begins when a mature ovum Just see once and a again then. sperm fuse. This is called fertilization. As a result of fertilization, a diploid zygote is formed. The zygote then divides mitotically to form a ball of cells. This ball of cells enters the uterus and gets attached to its wall. This leads to pregnancy.
see the events from fertilization to implantation in detail. Click a button to learn more. Around the 14th day of the menstrual cycle, a mature ovum is released into the fallopian tube. This is called ovulation. The ovum lies near the ampulla of the fallopian tube. A mature ovum has a number of layers. When sperms are released in the vagina, they swim towards the egg lying in the fallopian tube. For a sperm to fertilize the ovum, it must go through the zona pellucida layer. The acrosome of the sperm releases enzymes that help break down this layer. This induces changes in the zona pellucida so that no other sperms can enter it now. The secondary oocyte formed during oogenesis undergoes meiosis too when the sperm enters the ovum. A second polar body and a haploid ovum are formed. Fertilization occurs when the haploid nucleus of the ovum fuses with the haploid nucleus of the sperm to form a diploid zygote. How many students have understood this fertilization, the video which you have seen? Speak up, children. Yes, ma'am. Okay. You wish? Ma'am, it is not clear. Some video. Okay. I'll repeat it. Okay. एक बार फिर से देखो, याद कर लेना है. हाँ, yes, Astha saying something? No, ma'am. Okay, okay. Now see once again. Around the 14th day of the menstrual cycle, a mature ovum is released into the fallopian tube. This is called ovulation. The ovum lies near the ampulla of the fallopian tube. A mature ovum has a number of layers. When sperms are released in the vagina, they swim towards the egg lying in the fallopian tube. For a sperm to fertilize the ovum, it must go through the zona pellucida layer. The acrosome of the sperm releases enzymes that help break down this layer. This induces changes in the zona pellucida so that no other sperms can enter it now. The secondary oocyte formed during oogenesis undergoes meiosis too when the sperm enters the ovum. A second polar body and a haploid ovum are formed. Fertilization occurs when the haploid nucleus of the
ovum fuses with the haploid nucleus of the sperm to form a diploid zygote. Okay, so you have seen how the fertilization takes place and how the zygote is formed, which is diploid. Now see quickly the implantation. The zygote is pushed towards the uterus. On its way, it undergoes successive mitotic divisions to form 16 daughter cells called blastomeres. An embryo that contains 8 to 16 blastomeres is called a morula. Mitosis continues in the morula. It eventually forms the blastocyst. A blastocyst is hollow. It has an outer cell layer called the trophoblast and an inner cell mass, the embryoblast. The trophoblast gets attached to the endometrium of the uterus. The embryoblast differentiates to form the embryo. Once the trophoblast is attached to the uterus, the uterine cells divide and cover the blastocyst entirely. That's how the blastocyst gets rooted in the endometrium. This is called implantation. So you have seen children here that the tissues they are formed which are covering this blastocyst, and that is only the implantation. Here is a quick overview of the different stages of fertilization and implantation of a blastocyst. So now try to see in this diagram. You find in your book one diagram is given which is showing the different stages of development of the embryo and at different locations in the fallopian tube and the uterus. So try to understand the diagram. एम्पुलरी isthmus जंक्शन में डिप्लॉइड जाइगोट बन गया. जाइगोट जैसे ही बना वो आगे बढ़ा. आगे बढ़ते ही you will find that the mitotic division will start. One cell will divide to form two. Those cells will be called as blastomeres. 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16. 8 to 16 जब cells बन गए तो you will start calling that ball of cells as morula. Now 32 cell stage होने के बाद में you will find the cells will get organized और वो साथ में आगे भी बढ़ता चला जा रहा है in the fallopian tube. Am I audible, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so it is moving as well as it is growing or it is dividing. It is dividing means the nucleus inside it or the zygote which is a diploid cell is dividing. तो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे 16 ब्लास्टोमियर से 32 ब्लास्टोमियर तक. जैसे ही 16 बन गए 8 to 16 अपन उसको मॉड्यूला बोलने लगेंगे. मॉड्यूला के बाद में 16 भी फर्दर डिवाइड होंगे तो 32 बन जाएंगे. नाउ सी हियर द टाइम इज ऑल्सो मेंशन कि फर्टिलाइजेशन के 72 आवर्स में वो मॉड्यूला स्टेज में पहुंच जाता है. मॉड्यूला के बाद में जब 16 सेल से वो 32 सेल में पहुंचेगा उसके बाद वो ऑर्गेनाइज होंगे. तो वो धीरे धीरे करके वो यहाँ पहुंचना है उसको कहाँ यूट्रस में. तो यूट्रस पहुंचते पहुंचते वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा. And in blastocyst you have seen कि it will have what outer layer called the trophoblast और एक inner cell mass होगा which is known as the embryoblast. Okay, so 4 days
आफ्टर द फर्टिलाइजेशन यू आर फाइंडिंग दैट 4 डेज तक वो 4 डेज के बाद में यहाँ यूट्रस में पहुंच जाएगा, and fourth fifth day it will implant, it will get embedded in this endometrium. ओके, और एम्बेडेड कैसे होगा, वहां पर एंडोमेट्रियम के टिश्यूज और इनके ये एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट के टिश्यूज, they will get interdigitated and it will be covering the embryo, that is blastocyst, and implantation will occur. तो 6 days होते होते implantation हो जाता है और pregnancy will start. The pregnancy will start soon after the implantation. जब तक implantation नहीं हुआ, you will not say that the pregnancy has started. Is it clear? Yes, ma'am. Speaker कुछ Yes, सुनाई ma'am. दिया? हाँ, तो समझ में आया? अब बुक में जो लिखा हुआ है उसको फिर से रीडिंग करना. I will show you once again the embryo development another video. Okay, so it is already 54. I'm stopping the sharing. So you will read in the textbook and you will see the diagram. Done all of you. Manjul, did you understand? Yes, ma'am. Okay. Poonam. Yes, ma'am. Okay. अब आप लोग ना chat box में लिखो कि how much percent you understood fertilization and implantation. How much percentage you understood what we discussed today. Okay, Yuvesh says 75%, ठीक है. Okay, Astha 90, Anjali 85. Okay, good. Then other children. Okay, Manjul, good. प्रांजल ठीक है, 70% भी समझ में आया है. इट्स वेरी नाइस. ओके, शिफा अंडरस्टूड. तो अब क्या करना है, आप लोग को रीडिंग करना है. ओके, तो आलिमा अंडरस्टूड हाउ मच? मैम 80%। हाँ, ओके, ठीक है. तो अब क्या करेंगे, अब बाद में आप लोग ना बैठ के आज ही रात को बुक की उन्हीं पेजेस की रीडिंग करो वेयर दिस ऑल इज गिवन. Okay, and try to understand what is the process going on and how the process goes on one by one, the steps involved. Okay, next period again I'll show you another video and then you will understand further. Okay, so we will study the embryo development further. अभी अपन शॉर्ट शॉर्ट में किया एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और थोड़ा सा डिटेल में फिर नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस कर लेंगे. ओके एवरीवन. Yes, ma'am.